एक्साइटेड भाई, सब सेम ही तो है, बस साल ही तो बदल रहा है। अब इसी को देखो, फोन ही तो चला रही है, क्यों क्या कर रही है तो फोन पे? स्नैपचैट में न्यू फिल्टर्स ट्राई करेंगे, तुम लोग भी करोगे? सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत कुछ है, फिल्टर से तुम्हारा करियर बनेगा ना। इन सब पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा जाकर यूट्यूब पे खोले पे भी देख ले। Exactly. You know, our school is organizing a lot of competitions, programs, and even international exchange programs. This is definitely a golden opportunity for us 9th and 10th के students. मैंने तो पूरा प्लान बना लिया है। तो मेरी बात सुनो और फोन छोड़ो। Please, it's just another way to keep us busy. मुझे नहीं लगता ये सब हमारे लिए यूजफुल भी है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सोच, कितनी सोशलाइजिंग स्किल्स और नई अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है। क्रेजी। बात तो सही है, like this year we have to grab opportunities on our own. समझ रहे हो ना मेरी बात? Exactly. इस बार तो बिल्कुल लैब में भी जाने का मौका मिलेगा। वो अच्छा, अब पता चलेगा चलने वाली वो HCI की थी या फिर कुछ और। I agree. Like this is our new phase of our life. Maybe you both are right. I'll try every single thing this year. चलो अभी तो छोड़ते हैं, खेलने आते हैं। So, dear students of class 6 to 10, as you embark on the new chapter with resilience, courage, and triumph, this period marks a crucial transition as you all move towards grabbing opportunities and thus achieving all your goals. Always remember that opportunities aren't just found, they are created. Let's not dwell on missed chances, but instead focus on shaping our future. With determination and perseverance, we'll shine like stars, illuminating our paths to success. Welcome back, and let's make every moment count.
चार मछली, चार मछली, चार मछली, पानी में गई, पानी में गई, पानी में गई, पानी में गई। अरे ओ नायंसी, क्या कर रही है? कम इंस्टा चलाया कर। कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि ये गेम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलने में कितना मजा आएगा। आएगा तो, लेकिन अब वो दिन गए ना जब अपन फ्री पीरियड में खेला करते थे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो। ठीक है, काम डाउन, रियलिटी चेक क्यों दे रही है? But seriously, हम 12th standard students के लिए ना, this year is not just about academic challenges, but also about navigating the uncertainties of our career paths. That's true, but I just feel so uncertain. I have so many questions, but solutions का तो कुछ पता ही नहीं है. Will I be able to do it? How will I make my parents proud? All these thoughts just haunt me. It's okay to feel uncertain. It's okay to not have all the answers right now. What's important is that we stay focused, work hard, and explore our passions. Yes, you're right. Let's strive for excellence, not to meet others' expectations, but to fulfill our own dreams and expectations. Let us seize this moment to set new goals, to challenge ourselves, and to push beyond our comfort zones. खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। Let's roll up our sleeves, set our sights high, and grab hold of these opportunities with unwavering determination. For this is the last chance within the school. So let's make it truly count. आठ समंदर अपना नंबर खोज ले अब तू अपने दम पर खुद को मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे चंबर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर Better when I'm dancing, yeah. Better when I'm dancing, yeah. We can do this together. I got to feel better when you're dancing, yeah. झटका जरा सा महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजू आके देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले दरी दरी सी हंसी होठों में बसी है गुदगुदी कर रही हाँ मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है मचा कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है As we commence this academic journey of session 2024-25, let us take the inspiration from the subjects that we study and reveal the hidden messages they hold for us. जैसे हिंदी हमें सिखाती है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. In the same way, English teaches us that opportunities are like sunlight. If you will take too much time, you will miss them. Sanskrit enlightens us with the quote, Gati shoko na kartavyaho bhavishyam neva chintaye ya mano kamna apurna ya spraha na purna shoko neva kartavyaho purna mano yogi athak prayasen cha sarvaha kamna falibhutah bhavittavya. अर्थात बीती हुई बातों की अथवा आने वाले भविष्य की चिंता किए बिना हमें वर्तमान में इच्छाओं की पूर्ति हेतु कार्य करना चाहिए. Whereas chemistry teaches us that a positive attitude causes a chain reaction of positive thoughts, events, and
outcomes. It works as a catalyst that sparks extraordinary results. In addition, biology gives us the message to accept change just like dividing cells, seizing each opportunity for growth. Just as cells divide and adapt in response to the environment, let us thrive to unlock new opportunities. Maths inspires us to embrace every chance with the addition of ambition. Divide and overcome every challenge and multiply your efforts to achieve the goodness of life. The subject of computer science teaches us to seize the code and seize the day. The subject of social science makes us realize that the science of understanding people's needs and their unique relationship with art, literature, culture, philosophy, and psychology. And last but not the least, physics, the wonders of physics, teaches us to seize the opportunities with the force of determination, attracting the good with the magnetism of positivity and ambition. So dear Carmelites, let your passions guide you, your dreams inspire you, and your actions propel you forward to seize every opportunity and shine brighter than ever before.